A very good morning to all of you. So today we begin with national income and related aggregates. The most important thing regarding national income is that you have to be clear with the definitions, with the concepts. Once the definitions and concepts are clear, then it is a cakewalk. Though a big chapter, but very interesting. So the first thing you need to know is that in national income we are talking of economic good, the goods which can be sold in the market. Okay, and when we talk of good, we are talking not only of goods but of services also. We use the word good, but most of the time we are talking of goods and services which can be bought and sold in the market. So all those constitute economic good and we are consumption goods. Ultimately, why do we want income? To satisfy our needs. So consumption goods include all those goods purchased or own produced for the satisfaction of wants of a household. जो भी goods उन्हें डे टू डे के लिए चाहिए जिनसे उनकी वांट सेटिस्फाई होती है वो सारे कंजम्पशन गुड्स हैं. अब अगर उन यूज गुड्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं तो हम उसे ड्यूरेबल गुड कह सकते हैं. हमारे घर का फर्नीचर है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, दे आर ऑल ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. Some goods which can be used for a limited period of time are semi-durable goods like cloths, utensils, etc., which do not have a very long shelf life. Non-durable goods, those goods that are used in single act of consumption. All our food items will be classified under this, the goods which we use once and they are consumed. The last is services. Services are not something tangible, something we can hold like this in our hand, or we can see it like furniture or car, but they are intangibles where there is no time gap between production and consumption, like a teacher teaching the children, like a doctor giving services, like a lawyer giving his services. So all they are services. Another kind of important goods are capital goods. They are very important for any economy because ultimately if we want to increase the production of consumption good to satisfy the needs of the people, we need capital goods also. So what are capital goods? Being used for producing other goods. जो भी goods use होते हैं दूसरे goods की production में. अब यहाँ पे important ये है कि most of the time जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो मेजर पोर्शन उसमें रहता है आपका फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन प्रोडक्शन लाइक मशीनरी, लाइक इक्विपमेंट, लाइक बिल्डिंग्स. ओके, but it also includes a small portion of non-durable or single-use capital goods. सारे रॉ मटेरियल नहीं आएंगे लेकिन जो स्टॉक रॉ मटेरियल का या सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स का प्रोड्यूसर के पास है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट ओनली विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल गुड बिकॉज इट बिकम्स अ बेसिस फॉर कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन. ठीक है, what you need to remember is that all raw materials are not part of producer goods, but there is another term which we call producer goods. Producer goods include all those goods which are used in the production of other goods, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे पावर है, फ्यूल है, एक्सेट्रा. अब पावर फ्यूल कैपिटल गुड का पार्ट नहीं है, मशीनरी कैपिटल गुड का भी पार्ट है, रॉ मटेरियल सारा कैपिटल गुड का पार्ट नहीं है. तो जो रॉ मटेरियल यूज अप हो गया प्रोडक्शन में वो प्रोड्यूसर गुड तो है, कैपिटल गुड नहीं है. लेकिन जो एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक में रह गया, that only will be part of capital good. So what we say is that all capital goods are producer goods. जो भी goods production के लिए यूज हो रहे हैं वो सारे ही जो है प्रोड्यूसर गुड्स है. तो कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं. लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है. जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हो गया, जो पावर फ्यूल प्रोडक्शन में यूज हो गई, वो प्रोड्यूसर गुड तो है लेकिन कैपिटल गुड नहीं है. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Single use में जो हो गए, they are not capital goods. So here we need to differentiate between capital and consumer goods. Same good हो सकता है लेकिन उसका end use define करेगा कि वो capital good है या consumer good है. जैसे कार है, अब अगर कार हाउस होल्ड ने खरीदी तो वो कंज्यूमर गुड है, अगर कार टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी तो वो कैपिटल गुड है. रेफ्रिजरेटर अगर आपने घर में खरीदा
तो कंज्यूमर गुड है। किसी शॉप रेस्टोरेंट में अगर वही रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है, वो कैपिटल गुड है बिकॉज इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स का एंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स वही है बट वेयर वी आर यूजिंग देम मेक्स अ डिफरेंस। वही फर्नीचर आपने घर के लिए यूज किया तो वो कंज्यूमर गुड है, वही फर्नीचर किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में विल बी क्लासिफाइड एज ए कैपिटल गुड। एंड as we were discussing that capital goods are very important for any economy, क्योंकि जितने ज़्यादा capital good आपके होंगे उतनी ज़्यादा आप consumer goods भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उसी पे ही डिपेंड करती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में आपने कितने नए कैपिटल गुड्स ऐड किए, दैट इज़ योर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री है, इंडिविजुअली भी हम देखें तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है मान लो इंक्रीज करें, एक फैक्ट्री या दो फैक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, तो उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो क्या प्रोसेस हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो अकाउंटिंग सेंस में। आपके पास साल के शुरू में एक फैक्ट्री है, साल के एंड में दो फैक्ट्री है, तो आपने कितनी नई फैक्ट्री ऐड की? एक नई फैक्ट्री ऐड की। सो दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। So when we talk of इन्वेस्टमेंट, जस्ट एज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल गुड्स ही तो है। तो दो कंपोनेंट्स है इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री और स्टॉक इन्वेस्टमेंट।